और करंट गवर्नमेंट में आपको लगता है वो उन तक पहुंच रहा है? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जब प्रायोरिटाइज करते हैं ना, कहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन ना हमेशा ट्रिकल डाउन होने के लिए आपके मैक्रो पे स्पेंड होना चाहिए. What I feel what has been spent a lot on in a very good way is building of the highway infrastructure in India. Correct. I will just talk about, I mean, you can show data and you'll see how much has been spent. So there I'm very happy. When I traveled to UP and Lucknow over the past 3-4 years, I've been so surprised to see the quality of the roads and highways. I've traveled to, I've worked with a UN agency for a while, and a part of my assignment used to be to go and review the work of small satellite offices that they've opened in remote areas of India. Okay. Remote areas of practically every state in India. Udhar jaake we have to evaluate whether the budgets that they've been given, it's a UN agency, it's a non-government entity, and how that money is being spent. Hope there are no leakages, and part of our job was to audit it and to ensure that there are no leakages. Right. When we go to these places, it's mostly you take a flight to, say, the capital city or some major city, and then it's a long 5-6 hour car journey. I have been pleasantly surprised over the past 4-5 years to take those car journeys to say, wow, I could not have imagined that roads have reached these places. क्योंकि एक फंडामेंटल लेवल पे अगर आप समझेंगे, कोई भी इकोनॉमी बढ़ती है या कोई भी सिटी तब बढ़ती है, कोई भी इंसान काम के लिए 30 मिनट से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहता. एंड मुंबई वालों के लिए बातचीत आप छोड़ सकते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू. एब्सोल्युटली. तो कोई भी इंसान 30 मिनट से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहता. और आप देखेंगे जब लोग चलते थे तो सिटीज़ का साइज़ जो होता था, मैं 100-200 साल पहले की बात करूँ, छोटी छोटी सिटीज़ होती थी. करेक्ट. गांव ऐसे होते थे कि उतना ही बड़ा होता था कि आप ऑन फुट 30 मिनट में एक कोने से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, या रेडियस ऐसा बन जाता था 30 मिनट का. जब साइकिल्स आई तो सिटीज़ थोड़ी बड़ी होने लगी, क्योंकि आप 30 मिनट में ज़्यादा दूर जा सकते थे. तो घर थोड़ी दूर बनने लगे, उधर घर बनने लगे तो उधर दुकानें आने लगी, उधर और अमेनिटीज़ आने लगी. जब मोटर कार हुआ तो आप देखेंगे और बड़ा होते जाने लगा. राइट. वेल्थ और कैसे, एंड दिस वाज ऑल डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट इकोनॉमी वाज गेटिंग और दैट सिटी वाज गेटिंग. करेक्ट. Then when skyscrapers came, it wasn't just growth which was horizontal in a circle, it was also vertical. Perfect. Which is why the industrial revolution enabled that through automobiles and through travel is one of the biggest, most fundamental infrastructure things that you can build to boost an economy. So I would say if on ground I am seeing an improvement in roads and highway networks, that is a fabulous first step on a 15-20 year journey. In China today, if you get on a train, they travel at speeds of 800 kilometers per hour, which is matching the speeds of airline travel. And they've got magnetic rails where literally the track doesn't even touch the train. It's literally hovering over it and jerk free, just traveling at those speeds. And this technology came there, was present even 10 years ago. So what I'm saying is that gradually with the metro infrastructure in different cities, with highways, we are on that track. So let's also give credit to the government where it's due. गडकरी साहब को प्लीज टैग करना ये इस चंक में, ठीक है प्लीज.